Yeah, no problem. I'll have the access to the share of the screen, right? Yes. Yeah. I just changed my angle of this laptop to have a better lighting, right? Yeah. No worries. A very good morning, everyone. I'm Sakshi Arora, back to you again with PosiFest 2024. Today we have with us Rooma Arora. Before we proceed, let me give you a brief introduction about her. Rooma Arora is an educator with more than 15 years of experience in teaching and administration. She is a certified NLP, mindfulness and happiness coach, soft skills trainer, and Reiki and inner child healer. She is on a mission to inspire teenagers and adults to reconnect to their inner power and unleash their true potential in order to lead a happy, stress-free, and a meaningful life by using their mind power and integrating NLP and mindfulness techniques in their daily routine. A very warm welcome to you, Rooma. Thank you, Sakshi. Good morning. And good morning, everybody. Good morning, Sanjay, Kalavini, Geeta ma'am, Nilima. Good morning. It would be so good if you can have the cameras on and interact. So don't worry if you're in your pajamas, pajamas mein ho, night suit mein ho, nighty mein ho. We are not judging you. We are here to interact. Good morning. Yes? Good morning, Geeta. Good morning. Okay, so if you can just have your cameras on so that, जो भी activities हम करें, we are able to do it together. Good morning, Geeta ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, Dr. Ramesh. Good to have you here. Good morning. I welcome and acknowledge each one of you, to be here, spending time for your own self-development. और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हम we have people from all age right here, Sakshi. Yes. So I acknowledge each one of you and welcome you here. तो आज का session, my commitment is to make it very valuable, ताकि जब भी session खत्म हो, close हो, you all leave this session feeling कि yes, it was worth your time and energy and money. So that is my commitment. Okay. So आज का session का नाम है How to be an athlete of your mind, है ना?
सो ये सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज जब हम एंगेज करते हैं तो हमारी लर्निंग, हमारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ रहती है, वी आर एबल टू रिटेन इट, है ना। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, और आई विल स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इज इट कंफर्टेबल विद एवरीबडी? बायलिंग, साक्षी? Yes. Yes, yes. Okay, thank you. Thank you. Okay. So let's start. सुबह सुबह का time है. Let's start with just a new energy. I want everybody to shake off their hands. Shake up. Yes. Just shake off the old energy, the stuck energy, and let's begin the day with the new energy. Yes. Move it up, up, up. हाथ ऊपर लेके जाएंगे. Yes. On the sides, on the sides, and down. नीचे की तरफ shake करेंगे. Come back. And yes, let's sit straight. Okay. Also, let's begin with one beautiful activity. Okay. अभी you will see me. पहले मैं instruction दूंगी, आप मेरे साथ उसके बाद आप follow करेंगे, ठीक है? So what I'll do is we will move our hands like this, जैसे हम energy को अपने अंदर ले रहे हैं. So can you see? आप अपने हाथ अंदर की तरफ लेके जाएंगे. So move your hands inside. अंदर की साइड, अंदर की तरफ, जैसे हार्ट की तरफ आप एनर्जी खींच रहे हैं. ओके, सो टेक द एनर्जी इनसाइड, इनसाइड. ओके, वेलकम द एनर्जी. नाउ लेट्स चैलेंज आवर ब्रेन, क्योंकि आज का जो सेशन है दैट्स ऑल अबाउट ब्रेन, है ना. तो हम अपने ब्रेन को चैलेंज करेंगे. अब आप रुकेंगे और अपना हाथ ऐसे चलाएंगे. आपका एक हाथ आपके अंदर की साइड आएगा और एक हाथ बाहर की साइड जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? पहले हम दोनों अंदर कर रहे थे, वी वर टेकिंग इन एनर्जी. सो स्टॉप एंड नाउ सी मी. एक हाथ अंदर जा रहा है, एक हाथ बाहर जा रहा है. कैन यू सी? माय राइट हैंड इज गोइंग इनसाइड एंड लेफ्ट हैंड इज गोइंग आउट. सो फॉलो, चेक कीजिए अपने आप को. ओके, सो वी आर चैलेंजिंग आवर ब्रेन. हम अपने ब्रेन को चैलेंज कर रहे हैं. ओके, विल डू इट अगेन. टेक ऑल एनर्जी इनसाइड. ट्राई, एक बार फिर से ट्राई करेंगे. अंदर, नाउ स्टॉप, एंड नाउ वन इन, वन आउट, वन इन, वन आउट. चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग है. इज इट चैलेंजिंग? Yes. Yes, it is. So it's all about challenging our brain, okay? Challenging our mind, ठीक है? So अपना सेशन स्टार्ट करते हैं with this renewed energy. इसको हम फिर से एंड में करेंगे, and I'll tell you what is the trick, how we can इसको हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं, because ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने ब्रेन को चैलेंज करने का, ठीक है? तो आज का सेशन है टू बी एन एथलीट ऑफ योर माइंड, है ना. तो आप में से कोई शेयर कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है टू बी एन एथलीट ऑफ योर माइंड? क्या मतलब है इसका, टू बी एन एथलीट? डॉक्टर Dr. में Umesh, अनम्यूट mute. कीजिए. जितना भी हमने अपने लाइफ में बीइंग अ डॉक्टर न्यूरोलॉजी पढ़ी है जी जी. और न्यूरोलॉजी समझी है, तो द ब्रेन हैज गॉट ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. उसमें न्यूरॉन्स हैं. हाँ जी. अब वो न्यूरॉन्स जो हैं उनको यू कैन से दे आर फुल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम्म. दे आर इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उसके अंदर. हाँ जी. तो यदि हम उसको एक्टिवेट कर सकें किसी भी तरीके से, हम्म. और एक्टिवेशन जनरली होता है बाय सम स्टिमुलेशन, किसी भी प्रकार से यदि इफ वी स्टिमुलेट देम इन मतलब जो है, तो उससे क्या है कि उसकी एक्टिविटी एक दे दे दिस देन स्प्रेड एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी एंड यू गेट एनर्जाइज्ड एंड यू गेट एनर्जाइज्ड. यस सर. सो अब जैसे आप लेफ्ट और राइट बता रहे थे, तो वो भी मेरे को फिर अचानक ख्याल आया कि यदि इसको न्यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो you are activating the left brain as well as the right brain. एग्जैक्टली. ये थोड़ा यस. बहुत जो हमको समझ में आया, वैसे you are an expert, but this is what I could guess. Yeah, thank you so much for sharing, Dr. Umesh. And here we are learning from each other, है ना. हम it's not that I'm preaching, we are learning from each other, है ना. So yes, yes, yeah, excuse me. Give me a second. जैसा कि आपने excuse me.
Yeah, I'm sorry for that. So जैसा कि आपने कहा, हम लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना? So integrating, it's basically bilateral stimulation. That's a technical word. Okay? ठीक है. So basically athlete का mindset क्या होता है? That he wants to perform at its best. That is the mindset of an athlete, right? तो जब हम बोलते हैं कि let's be the athlete of the mind means हमारा mind हमारे लिए काम करे so that we perform our best. That is the simple tagline of this session. Okay, so I will just share my screen and then we will move ahead. Sakshi, I have the Sharing rights. Yeah. sharing access, right? Yeah, just give me a second. Can you see the screen? No, not yet. Sakshi, is it possible if I share the presentation with you and you can screen, because Yes. somehow it's not taking the access? I'm sorry for this. Yeah, Yeah, sure. I'll share it with you. Yeah. Yeah, just give me a second. I don't know. I take session and I'm able to share the screen right now. It's asking for an access. I don't know why. Asking me to. System access. Yeah, just give me 1 second. Sakshi, I'll be sharing it on your WhatsApp. Is that okay? Yeah. Yeah, no worries. Yeah. Okay, you shared it in the group. No problem, Charlie. No, I deleted that. Yeah.
I don't know, some technical issue here. Just give me a second, huh? Yes, Sakshi, it's there with you. Just check. Yes. Yeah. Is it there? Yes, I'm just sharing the screen. Sorry for this. Yeah. Yeah. So it was asking for some access, which I couldn't open. Yeah. Yes. Is this good? Yeah, it's good. Yeah. Is it visible to everybody? Yeah. Dr. Umesh, is screen visible hai? जी visible. Okay, thank you. Okay, so moving ahead, Sakshi, please move ahead. So Yes. we will see what to expect from this session. Okay, so we will understand that what is intellectual fitness, then why do we need, हमें क्यों जरूरत है intellectual fitness की, and what are some of the habits we are practicing or engaging on everyday basis that which are actually damaging our brain. Okay, so these habits we are practicing, या तो हम consciously या unconsciously इन चीजों को कर रहे हैं daily basis पे, that but without knowing that they are actually damaging our brain. Okay, then what are the age markers? Means जैसे जैसे हम age बढ़ती है, how does our brain change? Okay, as we age, as we grow older, how does our brain change? So that is, we'll talk about age markers. And the most important 5 steps we will learn how to make our mind sharp at any age, whether it's a small child, young adult, or people who are older, how to make your mind sharp. And then through a beautiful game, we will understand and learn about 10 brain foods. Or इस activity से I can assure you that throughout your life, you will never forget कि वो कौन से 10 brain foods हैं which are important for your brain power. And then we will understand how to build a better, brighter brain, what all things we have to integrate in our day-to-day life. And then we'll close it with a beautiful brain gym where I will be talking about different exercise. जैसे एक exercise मैंने आपको ये बताया how to challenge your brain. Similarly, I'll be giving you certain exercises जो आप everyday basis पे कर सकते हैं. They are simple, effective, but very good for your brain power so that we can make our brain sharp, bright, and better. Okay, so that is going to be the flow of the session. Okay, simple definition. What is intellectual fitness? Anybody? इंटेलेक्चुअल हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि वो इंसान बहुत इंटेलेक्चुअल है. व्हाट डज इट मीन? एनीवन? आप if you want to write, you can write. If you want to share by just opening your cameras, you can do that. The person would be using his or her brain a lot. Yes, Nilima, thank you for sharing. So basically, intellectual person is person who can use their brain logically, है ना? Logical thinking. They are good in decision making. They are good in thinking deeply and understanding things, ideas, and information, right? And when We have Kala ma'am also mentioning in the chat box. She says meaning rational. Yes, so rational, they are practical people, right? And then wellness is what? Wellness is just a state of having a good health, है ना? So basically it is also practicing वो healthy habits जो हम daily basis पे practice करते हैं so that we are physically and mentally fit, and so that we are not just existing but we are living. We are not just surviving but we are thriving. So that is wellness. So when we combine these two words, intellectual wellness is just that हम अपनी creative abilities और mental capacity को इस तरह use कर सकें so that we expand our knowledge, we are able to take better decisions, we are open-minded, we are not fixed. So that is what is intellectual wellness. हम सबका एम यही है कि हम लाइफ में जो भी डिसीजंस लें वो ऐसे लें जो हमारे फेवर में हो, राइट? बट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम डिसीजन ऐसे लेते हैं जो कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर होते हैं, है ना? वी लीड टू सर्टेन थिंग्स. सो मूविंग अहेड, व्हाई डू वी नीड इंटेलेक्चुअल वेलनेस और फिटनेस? हमें क्यों चाहिए, साक्षी? Sorry, Rooma. Sanjay has an answer. He says intellectual people who can think, express, and act with more impact than the common people through pool people. Okay. Common thought. Cool, हाँ, okay, perfect. Yes, thank you, Sanjay. Thank you for sharing. Yes.
Now, my next question to you is, please participate. Sakshi, don't change the slide. कि हमें क्यों Yeah. चाहिए? Why do we need to be intellectually fit? हमें ये mental fitness क्यों चाहिए? किस लिए जरूरत है हमें? हम physically fit हैं, it's fine, but we say we need to be intellectually fit also. Why do we need intellectual fitness? That is the question. Anybody? क्यों हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करे, it performs at its best? Why? To find solutions. Yes, Dr. Ramesh, to find solutions. What else? We can unmute and speak if anybody wishes to share. Yes. That's perfectly fine. We can understand think things it's because, better and accordingly we can act. Yes, we can understand things better and accordingly we can act. Thank you, Geeta ma'am. I think what is important is that in every step of our lives, we have to take some important decisions. And these decision-making capacity is possible only if we are having a very high level of intellectual wellness. Thank you. So, because we have to take the right decisions Yes. to solve our day-to-day life issues. This is what I was thinking. Yes, thank you, Dr. Ramesh. Thank you for the input. Yes, Nilima ma'am, you were saying something? Yes. yes, ma'am. I was saying that I think it's because the body and mind are strongly connected. So the wellness of both are equally important. Exactly. So when we talk of holistic wellness, holistic fitness, intellectual is part of it, right? Yes. Sakshi ma'am, please share the next screen. So basically, we need fitness, intellectual fitness, so that we can become a better decision maker. है ना? हम life में better decision ले पाए. We become better problem solvers, right? We have mental flexibility कि हम इतने rigid नहीं हैं. We are open to ideas. We have an expanded mindset. We are receptive to things. We can have our own ideas, views, and opinions. At the same time, we understand the ideas and opinions of the other people, right? And most importantly, to improve our memory, to improve our focus, our concentration, and to have clarity of thoughts. So also, that is why we need intellectual fitness. All these reasons which are there on the screen, right? So we have better learning capability. हमने देखा है, हम जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है, हमारा फोकस, हमारा अटेंशन स्पैन वो कम होने लगता है, राइट? our memory gets impacted, right? So for all these reasons, our intellectual fitness is important, so that when we age with grace, right? Yes, moving ahead. Sakshi, please change the screen. Yes. Yeah. Okay. Now we will talk about certain habits. Okay, I want all of you to please take the screenshot or note these down, because ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट दीज आर डैमेजिंग आवर ब्रेन. Okay, now many researchers have said that more than 40% of our day is habitual. इसका मतलब क्या हुआ? So by that we mean that it's just become our habit, right? We are not thoughtful of certain things, but we are just doing it, है ना? वो हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं, right? Because it's become our habit. And there's a beautiful saying which says that पहले हम habits को बनाते हैं और फिर habits हमें बनाते हैं. That means we make our habits first and then habits make us, right? So the first habit, we are not even aware that one bad brain diet we have, what kind of bad brain diet we have, which actually is damaging our brain. So any kind of, processed food, any kind of refined food, there are foods which have a lot of chemicals, जिसमें बहुत सारा chemical होता है. All these are bad brain foods, okay? Also sugar, high sugar content, है ना? We are so fond of eating sweets because हमारा सबका sweet tooth है, right? But without realizing कि high sugar content is actually very bad for brain health. Okay, so here we will learn about, in coming slides, what are the foods which are good for brain. So what are the brain food? What we'll learn that, right? Now the second habit, which is actually very bad for your health, for your brain health, is negative self-talk, right? हम पूरा दिन जो सोचते हैं, most of the time we are talking to ourselves, right? जो हमारे thought processing क्या है? It's we're talking to ourselves, right?
So any kind of negative self talk है ना, हम खुद से बोलते हैं that I can't do it, I'm too old, I'm not enough, right? All these words we use ourselves. I just cannot do anything, I'm bad at this, I'm ugly. Any kind of negative self talk which are actually our limiting beliefs, those are all really bad for our brain. Not only bad, but they're damaging our brain, right? Now, the third bad habit is being sedentary. है ना? आजकल most of the time we are sitting. I myself, when I take session online, most of the time I'm sitting, और आज की date में sitting is our next smoking, like smoking only, right? So हमारा brain जो है, it's part of our nervous system. If we talk about science, right? And the main function of our brain is to actually control our movement, है ना? लेकिन अगर हम move ही नहीं कर रहे, इसका मतलब we are not using our brain. So being sedentary, not moving, and sitting at one place or sitting for too long is actually damaging our brain, okay? And we are not even aware of it. Then the next habit, being around with negative people, right? So हम सबकी जिंदगी में ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोग होते हैं, those who drain our energy, they suck our energy. They just take away our creativity, they take away our motivation, right? And most of the time वो लोग, they are people who are either close to us, they could be our family members also. Now उनकी intention बहुत अच्छी हो सकती है, right? Their intention may be sincere, maybe good for us, but at times when that drains our energy, it's actually holding us back and it is actually damaging our brain, right? So we have to be also be around the people who are actually motivating us, who are pushing us to do our best, right? And at the same time, I think hame bhi, as a responsible people, we should also be such kind of a people that we are motivating others and encouraging others and not negative for others and not sucking other people's energy, right? So it's both ways, right? And the next habit is being in a dirty environment, right? Think of the play time when जब हमारा पूरा रूम मेसी होता है, right? But the moment we clean, for example, our cupboard, right? Suppose it's a messy cupboard, and once we clean it, when it is messy, we don't have any clarity, right? But once we clean it, the clarity comes in our mind कि हमारे कौन से कपड़े कहाँ पड़े हैं. Same with, suppose हम अपने laptop पे, all the files are all scattered, right? There is so much of chaos. But the moment we make folders, put them in files, and we have, clear our screen, suddenly a clarity of thought comes. So any kind of dirty environment, it is also actually, damaging our brain, right? Then obviously any kind of head injury and head trauma can be very bad for our brain health, right? Now, one of the most important again is not learning, okay? हमारी लाइफ में देर आर टू डिप इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम लोग लर्निंग को किससे एसोसिएट करते हैं? एजुकेशन से. सो हमें लगता है हमारा स्कूल और कॉलेज खत्म हुआ तो हमारी लर्निंग खत्म हो गई. I don't think any one of you will agree with that, right? But as humans, we associate learning with education, right? So we think that education ends and learning ends, but that is not the case. Similarly, when we retire, right? So when we retire, we think, early our learning ends, but that's not the case. So not learning is actually not growing. So when we learn, we grow. So growing and learning, it goes hand in hand. हमारी लाइफ में दो ही चीजें होती हैं, either we are growing or we are decaying. So if you want to grow, so we have to learn. So we'll talk about this in further slides as well. So not learning again is damaging our health, brain health. Then stress. We cannot expect our life to be stress-free. Stress is part and parcel of our life. Thinking of our life to be free of stress is just sheer stupidity, I would say. So chronic stress, but because we do not have coping mechanism to handle stress, that is the reason we are constantly, हर समय हम stress में रहते हैं. But there are researches which have proven that chronic stress actually shrinks our brain. तो अगर हम constantly stressful situations में रहेंगे या हम stress में रहेंगे, हमारा brain actually shrink करता है. So we have to have certain coping mechanisms so that we release stress from our life. And how to do it, we'll talk about in other slides. Then disturbed sleep.
कितनी बार ऐसा होता है जब when we have had a bad night's sleep, right? And अगला दिन कैसा जाता है? It's totally unproductive, right? We are groggy, we are irritated the whole day, and we are not productive, right? So, and the reason could be many, right? So any thing which is impacting, negatively impacting our sleep, they could be our gadgets, they could be mobiles, or we watch Netflix throughout the night, anything, or it could be, कई लोग रात को किसी को कॉफी पीने की आदत है, right? So even anything which is resulting in, bad night sleep, I think we should avoid that. So disturbed sleep is again damaging our brain, and then any form of addiction. So all these things, some of them we don't even realize, right? So the first key to doing anything is awareness, right? So we should be aware that all these things are habits which are actually damaging our brain. Okay, now moving ahead, Dakshi. Yes. Okay, so here I want to ask everybody a question, right? हमारे हम हमारे आसपास, हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में, we all have people who are like maybe 60 plus, 70 plus, right? ऐसी कौन सी कॉमन चीजें हैं जो आपने उनमें नोटिस करी हैं? What happens to our brain in terms of cognition? Okay, physically obviously our body slows down. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी स्लो डाउन करती है, राइट? आई एम 50 प्लस, सो आई कैन सी दैट चेंज इन माई बॉडी कि जो एक्टिविटी मैं आज से 10 साल, 5 साल पहले कर सकती थी, वो अभी मैं नहीं कर पाती हूँ. माई बॉडी हैज स्लो डाउन, एंड आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट? सो व्हाट आर द अदर थिंग्स आपने ऑब्जर्व की हैं अपनी फैमिली या अराउंड यू वेयर पीपल हैव एज्ड? सो व्हाट आर द स्पेसिफिक Madam, ऑब्जर्व्ड? I will like to share the family, your friends में. There are two family friends who have got this Parkinson's disease, and so and one can see that they need lots and lots of support. And as we see also in the literature that with the persons becoming senior citizens and with aging, there is also a great risk of Alzheimer's disease, Yes. as you have rightly mentioned in this presentation, wherein you lose memory. So this presentation of yours is very, very nice, because this mental gym will help in prevention of Alzheimer's and Parkinson's disease. Thank you very much. Thank you, Dr. Ramesh. Yes, you're very much right, sir. And all the common symptom of Parkinson, dementia, and Alzheimer disease is memory loss. Do you all agree? So as we age, हमारी memory slow जाती है, right? Memory, when we talk about memory, there is procedural memory, means how do we do things, right? And there is episodic memory, which means what is the sequence of event. So हमें कई बार याद नहीं रहता कि कौन सी चीज कब हुई थी, right? So it also includes your long term memory. So basically there is a memory loss or losing of memory capacity, that I would say, right? So there is mental decline, right? This is part of aging, right? Also our learning capability, है ना? हम बोलते हैं कि छोटे बच्चे languages बहुत जल्दी सीखते हैं, but as you grow, learning becomes a challenge, right? It takes time for us to learn new things. Similarly, our cognitive processing, our speech, everything slows down. Our focus and attention goes down. So all these are part of, our aging process, right? But iska matlab ye nahi hai that everybody will go through it. If we take care of our brain, if we take care of our intellectual wellness, we all can age gracefully, right? We all can make sure that we are living a life with brain which is like brilliant and agile. Agile means active, right? And how we can achieve that, we will learn now. Okay, move ahead, Sakshi. So here we are going to learn 5 important steps which can make our mind sharp. I want everybody to take, this is an acronym I've used here. I want you to take a screenshot or please make a note of it. Though they seem very simple, but in our day-to-day life, we don't give importance to this. As a result, it leads to
our mental decline, right? So here, our brain is the most important asset of our body. See, her organ important hai, but brain is actually controlling everything, right? So don't you think it is important for us to take care of our brain? Usually हम care करते हैं जो चीज़ हमें दिखती है ना, हम body की care करते हैं. But because brain is not visible, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं that we have to take care of our brain also, right? So when we talk about how to keep our mind sharp, so S is for sleep. I've already spoken about this कि कोई भी चीज जो आपकी sleep को disturb कर रही है, right? We try to remove them. So there are certain habits we have to either remove from our life, do less of it, or just take it away. And there are certain habits we have to, develop or do more of it, certain things, so that we keep our brain agile. Okay. So one is sleep. Have a very good night's sleep, right? Make sure 7 to 8 hours is there, and anything which is disturbing you or affecting your sleep negatively, just remove that from your, eliminate that from your daily routine, right? Then H is harness mindfulness, right? Now, what is mindfulness? Now, mindfulness is again, आजकल बहुत ये word use किया जाता है, but how to inculcate or how to integrate into our life, that is the challenge, right? So basically, mindfulness means to be present, to be aware. Most of the times हमारे thoughts oscillate करते हैं either in present or sorry either in past or in future, and what we lack is the present moment awareness, right? And the best way, the simplest way, the most effective way to be present is just to anchor with your breath, right? That is the reason the breath work is so important. So simple exercise, if I can mention here, 5:8 breathing we can do regularly. जब भी दिन में time मिले, practice that so that we are anchoring ourselves to the present moment, right? I will talk about mindfulness again in further slides. And then A is for always learn. As I said, learn new language, learn new skill, join new courses, right? So learning is growing. That is very important. So keep learning, keep learning, keep learning. Then R is for refuel with water, right? So hydration. We all know that जब हमें weight lose करना पड़ता है, सब बोलते हैं drink water, drink more water. It releases the toxins from your body, right? When we exercise, they tell, okay, drink water. But actually, how water is important for your brain, we do not know that, right? So just to give you a brief, how water is important for our cognitive health. Number one, it actually enhances or increases our attention. So 75% of our brain is actually water, made up of water, right? Or water kya kaam kar raha hai? It is acting as a cushioning or as a shock absorber, so that whenever there is a brain injury, the impact is less. That is one of the major reasons that why 75% of brain is water. It also, water is connected to our emotions. So it also helps us, regulate or balance our mood and emotions. It helps us, enhance or improve our memory and attention. No, we are not aware of all that, right? How it is affecting our brain positively, right? So water is, keep yourself hydrated, because researches again say that even a 2% of dehydration can affect our brain negatively. It can lead to fatigue, it can lead to anxiety, it can lead to irritation. So water, like hydration is very important. So keep drinking water. And like if you will say how much water somebody has to drink, then it depends on our activity level कि हम दिन में कितनी activity कर रहे हैं, what is our environment, हमारा body mass कितना है, all that. But I think on a baseline, 7 to 8 glasses of water is a must for everybody. But we actually forget to drink water. I myself, I have to give reminders to myself that, drink water, because day to day life में हम इतनी भागदौड़ में पानी पीना ही भूल जाते हैं. So water hydration is very important for your brain health. Physical exercise. Again, we know it is important for our body, but how important it is for brain, because when we move, when the body moves, it says the brain grooves.
So when we move our body, any kind of physical exercise, it will help us, help our circulation better, right? And if the circulation is better, more oxygen is going into the brain. If more oxygen is going to the brain, it is also reducing the inflammation in the brain, right? So जब हम बोलते हैं हमें ये headaches होते हैं, right? Headache is brain, is an organ, but it acts like a muscle. So when we exercise, then the oxygen goes in the brain. और जो लोग जिनको headache होती है, it's not that our brain is paining. Brain is a painless organ. उसको कभी भी उसके पास pain के receptors ही नहीं है. But because we get inflammation in our brain, that is the cause of headaches and migraines. So to reduce that inflammation, again, exercise is important because that will increase the oxygenation of our brain, right? Increase the oxygen level in our brain, right? So this is a simple acronym which I've created for, how to keep your mind sharp. Okay. So moving ahead. Yes. So here, Sakshi, can you just unshare the screen? Yes. I would like everybody to play a game. So 10 brain foods. I just want to know, आप लोगों में से कितने लोग इसको हमेशा याद रखना चाहते हैं कि आपके पास ये लिस्ट नहीं भी है तब भी आपको याद है वो 10 ब्रेन्स फूड ब्रेन्स कौन से हैं, ब्रेन फूड कौन से हैं? ओके, यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड ऑल्सो. ओके, सो आई एम गोइंग टू प्ले अ गेम. आर यू रेडी? है ना? हु आर द बेस्ट लर्नर्स? Who are the best learners? Children, है ना? बोलते हैं बच्चे सबसे जल्दी लर्न करते हैं, तो अभी हम बच्चा बनेंगे सब, ठीक है? I want everybody to be a kid with me. Okay, are you ready? Sanjay sir, if you can switch on the camera, you will have fun. Everybody, Indravati ma'am, Nilima ma'am. So let's play a game. So अभी एक फैक्ट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम एक इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, एनी इंफॉर्मेशन व्हेन वी कंबाइन विद एन इमोशन, इट गोज इनटू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? तो हम एक मेमोरी गेम खेलेंगे, ठीक है? इट्स अ लोकेशन गेम. और इसके बाद जब मैं आपसे पूछूंगी, आप देखना आपके आंसर्स कैसे निकलेंगे, ठीक है? सो यू कैन यूज दिस एनीवेयर इन योर लाइफ, राइट? बी क्रिएटिव. ओके, सो वी आर प्लेइंग अ लोकेशन गेम. मैं आपको लोकेशन दूंगी, आपने मेरे साथ साथ उसको टैप करना है और बोलना है, ठीक है? सो 10 लोकेशन, शो मी 10 फिंगर्स. अभी हम बच्चा बन रहे हैं, किसी ने शर्म नहीं करनी है, कोई शर्म नहीं कर रहा. 10 फिंगर्स, ठीक है? ओके, सो 10 लोकेशन मैं आपको दूंगी, आप मेरे साथ साथ उसको टच करेंगे. ओके, पहली लोकेशन है आपका हेड, टॉप ऑफ योर हेड. डू द एक्शन, साथ कीजिए. ओके, जिनका कैमरा ऑफ है वो कैमरा ऑफ करके भी कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट लोकेशन इज योर हेड. ओके, नाउ द सेकंड लोकेशन इज योर नोज. Okay. Okay. Third location is your mouth. Mouth. Fourth is your ears. Okay. Fifth is your larynx, ये जो throat area है. Okay. Sixth आपके shoulders. Okay. Seventh is your collarbone. Thank you, Sanjay sir. Welcome. Collarbone. Okay. Eighth is your fingers, hands. Okay. नाइन्थ आपकी टमी, स्टमक, जो आपका बेली बटन है. और 10th इज योर बॉटम, द सीट जहां बैठे हो, ठीक है? रिपीट करें 10 लोकेशंस. ओके, फर्स्ट लोकेशन कौन सी है? आप बोलेंगे, कोई भी बोलेगा. हेड. Head. ओके, सेकंड लोकेशन Nose. नोज. थर्ड लोकेशन Mouth. माउथ. फोर्थ, Ears. फिफ्थ, Throat. सिक्स्थ, Shoulders. सेवेंथ, Collarbone. एट्थ, Fingers. नाइन्थ Belly button. एंड 10th Your hip bone. योर हिप बोन. ठीक है, 10 लोकेशंस हो गई. ठीक है, नाउ 10 ब्रेन फूड्स. ओके, अब इसको हम फन वे में लर्न करेंगे. फर्स्ट ब्रेन फूड एवोकाडो. अब हम इंडिया में लोग इतना एवोकाडो यूज नहीं कर सकते, सो यू कैन टेक एज एट टमाटो. ठीक है, सो आप इमेजिन करो आप टमाटो आपके सर पे पड़ा है, ठीक है? आप उसको बैलेंस कर रहे हैं, टमाटो, ठीक है? उसको इमेजिन करना है. पहली लोकेशन पे क्या रखा हमने? टमाटो. सो Tomato. इमेजिन आप बैलेंस कर रहे हैं, वो गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? सो इट बैलेंसिंग टमाटो. ओके, फर्स्ट फूड डन. ओके, सेकंड फूड, सेकंड लोकेशन क्या थी? नोज. Nose. ब्लूबेरीज. इमेजिन करो ब्लूबेरीज आपके नाक में फंस गई हैं, छोटी छोटी ब्लू कलर की बेरीज होती हैं. हम बच्चे बन रहे हैं संजय सर, सब अलाउड है, बच्चों को सब अलाउड है. ब्लूबेरीज
बच्चे क्या करते हैं, हर समय नाक में उंगली डालते हैं। हमें ब्लूबेरीज यहाँ फंस गई हैं, इमेजिन करो। ओके, ब्लूबेरीज। थर्ड लोकेशन कौन सी है? Mouth. थर्ड फूड इज ब्रोकली। यू ऑल नो ग्रीन कलर की गोभी, राइट? ब्रोकली। सो इमेजिन करो ब्रोकली खाई और आपके दांतों में ब्रोकली फंस गई है यहाँ पे, है ना? वो ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी यहाँ फंस जाती है, राइट? ब्रोकली। ओके, तो कहाँ यहाँ पे क्या रखा था हमने? Tomato or avocado. और एवोकाडो। यहाँ क्या रखा था हमने? Blueberries. और मुंह में क्या फंस गया? Broccoli. ब्रोकली। नाउ योर ईयर्स, है ना? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, है ना? हम कानों में कई बार बच्चे होते थे, हमारी मम्मा ऐसे तेल डालती थी कान में। ऑलिव ऑयल, olive oil in your ears. Okay, imagine how sticky it is, right? Okay, next location, Throat. boiled egg. Imagine करो boiled egg यहाँ अटका पड़ा है। boiled egg अटक गया यहाँ पे, कैसा लगेगा? Okay, boiled egg. Okay, next location, shoulders. green leafy vegetables, spinach, है ना? और क्या, साग, पालक, सब यहाँ से लटक रहा है, सब लटक रहा है यहाँ से। ठीक है, हो गया? ओके, नेक्स्ट लोकेशन क्या थी? कॉलर बोन, हियर। सो फिश, इमेजिन करो एक फिश की माला डाली हुई है आपने यहाँ कॉलर बोन में। फिश, फिश। ओके, नेक्स्ट लोकेशन वाज योर हैंड। टर्मरिक, हल्दी। आप इमेजिन करो पूरे हाथ हल्दी से सने हुए हैं, ग्रीन येलो कलर के हो गए, हल्दी से सने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन इज योर Belly button. बेली बटन। सो वॉलनट, ऑल द नट्स, इमेजिन करो सब बेली बटन से बाहर निकल के आ रहे हैं। अखरोट, बादाम, काजू, एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ योर बेली बटन। ओके, नाउ लास्ट लोकेशन क्या थी हमारी? बॉटम, Hip. हिप बोन। डार्क चॉकलेट। अब आई डोंट वांट यू टू इमेजिन एनीथिंग, कुछ इमेजिन नहीं करना। डार्क चॉकलेट कहाँ से आ रही है, कुछ इमेजिन नहीं करना। ठीक है, सो लास्ट टाइम मैं रिपीट करूंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, ओके। So here, tomato, okay, blueberries, broccoli, olive oil, egg, green leafy vegetables, fish, okay, turmeric, haldi se sane hue haath, and then your nuts, walnuts, any kind of nuts, and the dark chocolate. ओके, चलो रेडी। अब मेरा क्वेश्चन, ठीक है? 10 ब्रेन फूड्स, कौन बताएगा? फर्स्ट ब्रेन फूड, टोमेटो। टोमेटो। आप सब इकट्ठे भी बोल सकते हैं, कैमरा वो अनम्यूट करके आप लिख भी सकते हैं। ओके, टोमेटो। सेकंड ब्रेन फूड, Blueberry. ब्लूबेरी। ब्लूबेरी। ओके, थर्ड ब्रेन फूड, ब्रोकोली। Broccoli. फोर्थ ब्रेन फूड, Egg. Egg. Olive oil. ऑलिव ऑयल। Olive oil. ऑलिव ऑयल। फिफ्थ, Sorry. Egg. एग, egg. बॉइल्ड एग। Boiled egg. सिक्स्थ, Green leafy ग्रीन vegetables. लीफी Green वेजिटेबल। leafy vegetables. सेवेंथ, Fish. फिश। एट्थ, Haldi. Turmeric. Haldi. नाइन्थ, Nuts. All Dry nuts. fruits. ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, बेली बटन से। एंड 10, Dark 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 chocolate. chocolate. डार्क चॉकलेट्स। I'm sure you will always remember this, these 10 brain foods. So please Yeah. include all these 10 brain foods अपने रेगुलर डाइट में, इसको इंटीग्रेट कीजिए। आपको कहीं किताब देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली कम बैक टू योर लोकेशन और आपको फूड याद आ जाएगा, है ना? तो हम मैडम रूमा जी, हाँ जी, बहुत बहुत पहले तो आपकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। प्लीज एक्नॉलेज माय एडमिरेशन। और मेरे को भी एक आइडिया आया है, हाँ ब्रेन जी। का काम हो रहा था तो एक आइडिया आया है। हम्म, मैं आज दिन में बैठ के टाइम निकाल के हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये 10 उसमें इनपुट्स डाल के हाँ, कोशिश करूंगा, यदि इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई इमेज बन के आ जाए वाओ वाओ। आप तो प्लीज शेयर मतलब कीजिए जो मुझे है इसके कि ऊपर। हाँ बड़ा जी। बड़ा एक बड़ा ही, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, कोई ना कोई इमेज यदि आएगी तो हाँ। बड़ी फर्स्ट क्लास ऐसी इमेज दिखनी चाहिए कि भाई ये ऐसा है ना। हाँ जी, और बस एक ही था इसमें कि जैसे कि फिश है, हाँ तो क्या फिश का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? जी, मतलब कई हम बार फिश नहीं खाते,
तो ये बस, और बाकी तो सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। कोई बात नहीं, हमने 10 में से अगर 9 भी खा लिए तो बहुत बढ़िया बात है ना? हाँ, ये तो बात भी सही रही। हाँ जी, यस। डेफिनेटली हम उसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ सकते हैं, और भी बहुत सारे ब्रेन फूड होते हैं, बट ये जो 10 मेन है वो हमने याद करे ताकि हमें भूले नहीं, है ना? तो हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन और इमोशन। इमोशन क्या था? फन, फन एलिमेंट था, है ना? सो इंफॉर्मेशन और इमोशन को हमने ज्वाइन किया, तो हमारा चला जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, अब हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया। I'm sure you enjoyed it, right? Thank you. So moving ahead, Sakshi, can you share the slide, please? Yes. So जितने भी हमने हैबिट्स पढ़ी है ना, हैबिट्स जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती हैं, उसका जब हम ऑपोजिट करेंगे, राइट, दैट मीन्स दोज आर द हैबिट्स विच आर हेल्पफुल फॉर द ब्रेन, राइट? जैसे हमने बैड ब्रेन हैबिट्स देखी कि प्रोसेस्ड फूड, शुगर कंटेंट, ये सब गलत है, राइट? So automatically the good ones are like the opposite, the brain foods are good for your brain health, right? Now again I want you to take this screenshot or write these down, how कौन सी चीजें हैं जो हम एवरीडे बेसिस पे कर सकते हैं सो दैट आवर ब्रेन बिकम्स बेटर, ब्राइट, शार्पर एंड एजाइल एंड ब्रिलियंट, राइट? सो फर्स्ट इज रीड। अगर आप किसी की भी रीडिंग की हैबिट नहीं है, प्लीज इंक्लूड रीडिंग एज पार्ट ऑफ योर डेली हैबिट। और कुछ नहीं तो सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट या 10 पेजेस, चॉइस इज योर्स, बट इंक्लूड रीडिंग। जब आप व्हेन यू रीड, all your neurons get activated and neural corrections are built. So reading, make it part of your daily habit, right? Second is intellectual stimulation. That means keep yourself intellectually stimulated. जैसे डॉक्टर उमेश ने कहा कि हमें अपने मेंटल स्टिमुलेशन पे काम करना है, राइट? और हम कैसे कर सकते हैं? आजकल बहुत सारी बुक्स हैं, सुडोकू, आई हैव जस्ट मेंशन 2-3 हियर, सुडोकू, क्रॉसवर्ड, राइट? आप, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज थिंक, और कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन सी गेम्स हैं जो आप खेल सकते हो या हम खेल सकते हैं टू कीप आवर माइंड और ब्रेन स्टिमुलेटेड। आई वॉन्ट इनपुट्स फ्रॉम यू, और कौन सी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो? आई हैव अ लिस्ट बट आई वॉन्ट यू टू बी जस्ट बी प्रोएक्टिव एंड शेयर। और कौन सी गेम्स हैं जो हम डेली बेसिस पे खेल सकते हैं ताकि हमारे ब्रेन को एक्टिवेशन मिले, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिले? Those who play chess. Yes, very good. Chess, Sudoku, crossword is there. Anything else is coming to your mind? क्या खेल सकते हैं हम और जिसमें दिमाग लगे? You can play Scrabble. Scramble, yes, Nilima ma'am. Scramble. What else? Drawing and painting. Yes, that can be the hobby we can cultivate. Yes, that is a hobby we will talk about. Yes, Dr. Ramesh. What else? लेगोज देखे होंगे, आजकल बच्चे लेगो प्ले करते हैं, राइट? इवन वी कैन, जरूरी नहीं है बच्चों ने ही लेगोज प्ले करने हैं, राइट? वी कैन ऑल्सो प्ले, वी हैव आवर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन जो घर में लेगोज खेलते हैं, वी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, राइट? देन बिंगो इज अ गेम, स्क्रैम्बल इज अ गेम, सो लॉट ऑफ सुडोकू तो बेस्ट है, राइट? आई हैव my mother who doesn't sleep unless and until she has done 10 pages of sudoku. वो इतनी addicted है, उन्हें करना ही करना है sudoku. So I'm just giving you an example. You can do whatever आपको जो चीज आपको अच्छी लगती है, but do something so that you are intellectually stimulating your brain. Okay, then stay away from intellectual junk. अब क्या है intellectual junk? We all know, right? आज की डेट, एक टाइम ऐसा होता था, आई थिंक यू विल ऑल एग्री विद मी, जब हम छोटे थे फोन नंबर्स हमें टिप्स पे याद होते थे जब तक ये गैजेट्स नहीं आए थे, राइट? बट आज की डेट में एक अपना फोन नंबर भी याद रखना इज अ चैलेंज। आई हैव टू राइट इट डाउन इन माई नोट्स इफ समबडी आस्क मी कि आपका फोन नंबर क्या है। यानी ऑल दीज गैजेट्स हैव एक्चुअली किल्ड आवर क्रिएटिविटी, है ना? हमारा वो माइंड ही चला गया। फोन नंबर्स कितने याद रहते थे, आजकल वी आर सो बैड विद स्पेलिंग्स, क्योंकि आपके हमारे फोनों पे क्या है, स्पेल चेक है, यू टाइप फर्स्ट फ्यू लेटर्स और आपका पूरा स्पेलिंग्स आ जाते हैं, राइट? सो वी हैव बिकम सो बैड विद स्पेलिंग्स, वी हैव बिकम सो बैड विद रिमेम्बरिंग नेम्स, लोगों के नाम ही नहीं याद रहते, है ना? सो ऑल दिस इज हैपेंड बिकॉज there is a term which is used, it's called as what do you say that, digital dementia, that is what is called. हमें पिन वर्ड्स याद, पिन नहीं याद रहते, हमें पासवर्ड्स याद नहीं रहते, राइट? सो व्हाई इज ऑल दैट हैपनिंग? Because we are so much dependent on the gadgets, right?
We are so much just behind the screens all the time, whether it is our phone screens, whether it is our TV screens, या वो Netflix है या social media है. Mindlessly we scroll the reels. There was a time when I was doing it for 1 hour unless and until मैंने खुद पे चेक लगाया कि 10 मिनट से ज्यादा मुझे रील नहीं देखनी है, क्योंकि मुझे लगता था मैं 10 मिनट देख रही हूँ और टाइम पूरा 1 घंटा बीत जा रहा था. एंड आई एम नॉट द ओनली वन, देयर आर मेनी पीपल इन माय फैमिली हु आर डूइंग इट, मेनी पीपल in my friend circle who are doing it. So we are so addicted to all these gadgets, right? So stay away from intellectual junk, because that is just killing our brain cells, killing our creativity. It's doing no good to us, right? So limit it. It's not बहुत मुश्किल है कि हम इन चीजों से दूर रहें या बिल्कुल अपनी लाइफ से हटाएं, बट लिमिटेड. सो अवेयरनेस होनी जरूरी है कि हमें पूरे दिन में इनका कितनी देर यूज करना है, कितनी देर इस्तेमाल करना है, राइट? सो दैट awareness and wisdom should be there. Then bringing novelty का मतलब क्या? नयापन. मतलब आप, it is again related to learning. आप नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. कुछ भी चीज सीखने की कोई एज नहीं है. Everybody and anybody can learn anything at any age, right? I am not getting the name of the lady who became a yoga instructor at the age of 80. There was this lady, I'm sorry, I should have shown the picture, who learned driving, जिसने अपना driving license at the age of 80 लिया था. So there are people who are learning. So किसी भी चीज को सीखने की कोई एज नहीं है. सो लर्न न्यू थिंग्स सो दैट हमारा, अगेन वी हैव मोर न्यूरल कनेक्शंस, more synapses which are basically neural connections in the brain, right? एक साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जो भी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स या सेल्स डैमेज हो जाते हैं वो कभी भी रीजेनरेट नहीं होते. जैसे हमारी बॉडी का कोई भी एक सेल डैमेज होता है ना, तो वो रीजेनरेट हो जाता है. आवर बॉडी हैज द कैपेसिटी टू रीजेनरेट. लेकिन अगर ब्रेन का सेल डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, है ना, चाहे वो कोई इंजरी है, चाहे वो हमारे मिसयूज की वजह से है, चाहे वो किसी एडिक्शन की वजह से है, अगर ब्रेन सेल डैमेज हो गया वो रीजेनरेट नहीं होगा. बट we have the capacity to create new cells. Okay, so to create new cells we have to learn new things, we have to learn, bring novelty into our life, right? So nayapan laiye. Then get creative, as जैसे डॉक्टर उमेश जी ने कहा था कि cultivate a habit, drawing, painting, कोई भी hobby. It can be art, it can be music. Yes, age is just a number. Be a lifelong learner. Thank you so much, Dr. Umesh. We have to be lifelong learners. अगर आप में से किसी ने इकिगाई बुक पढ़ी है, so there was a research done on people who were 80 to 90 years of age. जो भी 80 और 90 साल की उम्र के लोग थे, उन पे एक रिसर्च की गई थी कि उनकी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है, what is the reason or the secret behind their long life, right? तो आधे लोगों का जब उन्होंने रिसर्च को उसको एनालाइज किया, तो वन वाज लाइक देयर फेथ, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो हर समय ग्रैटिट्यूड में रहते थे, एंड देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज दे कुड रेगुलेट देयर इमोशन. बट ऑल्सो अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट वाज दैट दे वर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. they would learn they would learn new things. Okay, so that was one of the research. So cultivate a hobby. Now koi bhi hobby is also a very very beautiful way to bring in mindfulness in our life. अब आप बोलोगे कि ये mindfulness और hobby का क्या relation है, right? So I'll give you my example. For example, I love to do drawing. Okay, तो जब मैं drawing करने बैठती हूँ, है ना, या painting करने बैठती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरा टाइम कहाँ चला जाता है, बिकॉज माई माइंड इज टोटली इन टू माई ड्रॉइंग. सो आई एम बेसिकली मेडिटेटिंग. सो कोई भी हॉबी आप जब आप उस लेवल पे करते हो, जब आप पूरे उसमें एंग्रॉस हो जाते हो, आपको टाइम का कुछ पता नहीं चलता, है ना, आप यू आर टोटली योर प्रेजेंट with all your five senses, doing that hobby because you like it so much. It is a kind of meditation, and that is nothing but being present, being mindful, right? So cultivate a hobby. Then stay hydrated. I've already spoken about importance of water. पानी क्यों important है हमारी brain health के लिए, right? So stay hydrated all the time. Sakshi, please change the screen. Then also include all the brain foods, right? We talked about into your life. So diet and sleep is important, right? Sleep also I've spoken that just keep all anything that is negatively impacting your sleep pattern, just remove it or just lessen it from your life.
practice mindfulness. Again, breathing. So do breathe, simple breathing exercise as many times in a day you do, and you will see the difference, how it calms your mind. Always remember that a present mind is a calm mind. अगर हमारा दिमाग past और future या overthinking में रहेगा, it will not be calm. And a calm mind is full of answers, solutions. And a stressful mind is full of questions, doubts, and confusions. So अगर हमें अपने mind को calm रखना है, please practice mindfulness. Now noticing is a part of mindfulness. मतलब notice कोई भी चीज हो रही है, bring in all your five senses, eyes, ears, nose, hands, and touch, and your what is the other sense, all the five senses into practice, right? So notice your feelings. If you're feeling something, give yourself some time, sit down and notice your feelings, your thoughts and emotion, that what all is going in our mind. So please bring awareness into your life. Ask yourself better question. आप ऐसे इमेजिन कीजिए दैट हमारा ब्रेन एक गूगल सर्च इंजन है ना? अगर आप गूगल से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, है ना, यू विल गेट दैट काइंड ऑफ आंसर. अगर आप एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछोगे, हाउ टू कमिट ए सुसाइड, उसके लिए भी आपको 1000 तरीके बता देगा हाउ टू कमिट ए सुसाइड. सो इट्स ऑल अबाउट what kind of questions we are asking ourselves. So simple thing, I always follow in my life that मेरे को पहले बहुत आदत थी ये बोले कि आई कांट डू इट, आई कांट डू इट. और जैसे ही मैं बोलती हूँ आई कांट डू इट, आई क्लोज ऑल माई ऑप्शंस. मतलब मैंने सब दरवाजे अपने लिए ही बंद कर दिए कि मैं नहीं कर सकती. नाउ आई फ्लिप द क्वेश्चन एंड आई आस्क माई सेल्फ, हाउ कैन आई डू इट. इफ आई फाइंड अ चैलेंज, अगर मुझे कोई चीज चैलेंजिंग लगती है, instead of saying I can't do it, I ask myself, how can I do it? So just did you see how just changing my question helped me? और जैसे ही मैं अपने ब्रेन से अपने माइंड से ये पूछती हूँ how can I do it, I start getting options. I start getting, अच्छा मैं ये कर सकती हूँ, अच्छा मैं वो कर सकती हूँ. So ask yourself better question. Do not underestimate the power of asking yourself the questions, right? Then another important one, हम लोग इतनी प्राइड लेते हैं, इतने आप शान समझते हैं दैट आई कैन डू मल्टीटास्किंग. आई थिंक हर कोई, एज मदर्स वी ऑल मल्टीटास्क, राइट? हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, बट we have to keep in mind that multitasking, our brain is not meant for multitasking, है ना? तो हम एक्चुअली जिसमें हम बहुत प्राइड लेते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, we are actually reducing our productivity, we are reducing our total time. It is nothing but task switching. तो जब हम खाली एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करते हैं, जिसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं. और बिकॉज ऑफ दैट हमारी प्रोडक्टिविटी गोज डाउन, हमारा द परसेंटेज ऑफ मेकिंग एरर्स, हम जितने मिस्टेक्स करते हैं, दैट गोज अप, राइट? लेकिन हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग करके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. सो stop doing multitasking, but start focusing on one thing at a time. So do monotasking. You will realize, you will experience that you are performing better when you're monotasking, right? So no multitasking, but monotasking. Then stay socially active and build connections, right? Again, in the book Ikigai, which I talked about a little while ago, they talked about how लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा रीजन उनका लॉन्ग लाइफ का ये भी था बिकॉज दे वर बिल्डिंग कनेक्शन. सो जॉइन अ ग्रुप. आजकल इतने सीनियर सिटीजन के ग्रुप्स हैं, जॉइन अ क्लब, बी पार्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन. और कुछ नहीं तो पार्क में जाके एक लाफिंग क्लब, just be active, socially active, so that you're meeting people, talking, having conversation, and building more connection. That is a very, very good way to keep yourself sharp in your mind, right? Exercise, we've already spoken about how important it is. Keep yourself physically active. Meditate, again, to bring you into that state of present and also to calm your mind, right? And diet and sleep. We cannot ignore any of these, right? So if we follow all this, I'm sure we are going to have a much better cognitive health than we think, and we will all be able to age gracefully, right? Sakshi, please move ahead. ओके, अगेन थोड़ा बच्चा बनने की बारी आ गई. सो लेट्स कम बैक. 4 सिंपल एक्सरसाइजेस आई वांट टू शेयर. सो बेसिकली माइंड वर्कआउट है ना? तो मैं आपके साथ ये 4 सिंपल ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी. आप इसको एवरीडे बेसिस पे कर सकते हैं एंड यू विल रियलाइज हाउ इट इज helping you cognitively, work better, perform better, and be, in a state of agility, right? So
Can we have the screens on again? Sakshi, please unshare the screen. Okay. Are we ready? Can we have you on the screen, please? Okay. So the first one, पहला वाला है trace your X. Okay. So आप क्या कर सकते हैं? You can sit straight. क्लोज, अब जो एक्स जो है आपने अपनी आई बॉल से बनाना है, ठीक है. सो यू विल क्लोज योर आईज, आप अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी आंख को ऐसे मूव करेंगे जैसे आप एक्स ट्रेस कर रहे हैं, एक्स. ओके, सो डू इट, साइकिल ऑफ से 15 to 20. सो जस्ट ट्रेस इट विद योर आई बॉल्स. क्लोज योर आईज एंड ट्रेस एक्स. अपनी आई बॉल से आपने एक्स बनाना है. दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज बिकॉज it activates your vagus nerve. Vagus nerve actually हमारे brain से हमारे stomach तक जाती है. It is one of the longest cranial nerve, which is basically responsible for activating our parasympathetic nervous system for relaxation. सिंपल, आप इसको इतनी टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है. ये सिंपल एक्सरसाइज है जिससे आपकी माइंड और बॉडी रिलैक्स करती है. सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्रेस एन एक्स विद योर आईज. एक्स बनाए अपनी आई बॉल से अंदर. Do it for 15 to 20 times. और ये ऐसी एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आप कहीं पे भी बैठे बैठे भी कर सकते हो, ठीक है. सो द फर्स्ट इज ट्रेस एक्स, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज लेजी एट. लेजी एट में आपने क्या करना है? लेजी एट का मतलब हुआ 8 सो गया, है ना. लेजी होते हैं तो हम लेट जाते हैं. सो 8 लेट गया, राइट. सो इट्स एन इन्फिनिटी साइन होता है. जैसे 8 खड़ा हुआ 8 ऐसा होगा, है ना. और लेटा हुआ 8 कैसे होगा? ऐसा होगा, है ना. 8 लेट जाएगा. सो यू विल स्ट्रेच योर आर्म्स और आपने अपने सर नहीं हिलाना, कुछ नहीं हिलाना. जस्ट कीप योर आर्म्स क्लोज टू योर ईयर्स एंड ट्रेस बड़ा 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 बड़ा. साक्षी, मूव योर आर्म एंड ट्रेस, ताकि एक लेफ्ट साइड में जा रहा है और एक राइट में. आपने सिर्फ लेजी 8 को ट्रेस करना है. इट्स एन इन्फिनिटी साइन वी आर ट्रेसिंग. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? anything when it crosses the other side. So brain, हमारे head के नीचे, the left side is controlled by our right brain and our right side is controlled by our left brain. So we are doing bilateral exercise, okay, bilateral stimulation to stimulate both the left and right side of our brain so that there is a connection between the logical and the creative brain is strengthened. So ये आप 30 to 40 साइकिल कर सकते हैं. सिंपल एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं करना. जब आप स्ट्रेचेस करते हो, जस्ट ड्रॉ 8. दिस इज योर माइंड वर्कआउट, है ना. बॉडी वर्कआउट हम स्ट्रेचेस से करते हैं. व्हेन यू वांट टू डू योर माइंड वर्कआउट, डू दिस आई ट्रेसिंग एंड डू दिस ट्रेस द 8. ओके, नेक्स्ट वन. ओके, आपके पास पेन पेंसिल है? अपने दोनों हाथों में पेन पकड़िए. अगर है, नहीं है तो आप समझ लीजिए, ठीक है. 2 पेन पकड़े या 2 पेंसिल, जो भी. और जो भी आपके पास पेपर या डायरी है, राइट नाउ मेरे पास सपोज पेपर है, उस पेपर पे आपने इन दोनों हाथों से, ठीक है, दोनों हाथों से आपने ट्रेस करना है. सो पेपर के ऊपर आप कोई भी लाइन, पैटर्न, कुछ भी डिजाइन, कोई भी शेप बनाओ, बट दे शुड बी मिररिंग ईच अदर. मतलब एक जैसा बनाना है. तो अगर मैं सीधा बना रही हूँ तो एक जैसा, सर्कल बना रही हूँ तो मेरे हाथ एक जैसे चलने हैं. गॉट इट? सो इट इज कॉल्ड डूडल, डबल डूडल वी आर डूइंग, राइट. सो I can draw circle, I can draw shapes, I can draw patterns, कुछ भी ड्रॉ करूंगी, बट my both hands should move together on the paper. मतलब मैं ड्रॉ कर रही हूँ. अभी मैं आपको हवा में दिखा रही हूँ, बट आपको इसको, यस मैम, गीता मैम आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. आप पेन को थोड़ा सा टिप से पकड़िए. गीता मैम आप एक मिनट देखिए मुझे. हाँ, थोड़ा टिप से पकड़िए. हाँ, टिप से पकड़िए और फिर आप ड्रॉ कीजिए. हाँ जी, हाँ जी, अब आप ड्रॉ कीजिए. परफेक्ट. सो बिल्कुल हाथ एक जैसे चलने. कुछ भी ड्रॉ, एनी लाइन, एनी शेप. अगेन, this is bilateral stimulation. We are strengthening the connection between our logical and creative brain. We are activating both sides of the brain. So that is called double doodle. It's a simple mind workout. It's a mind workout. In fact, आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी हो रही है, आपके हाथ भी चल रहे हैं, हमारी आर्म्स की एक्सरसाइज भी हो रही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है. इट्स अ माइंड वर्कआउट, ठीक है. सो वी डिड 3 exercises. Trace X from your eyeballs, close your eyes, then you draw, trace 8, lazy 8 or infinity sign with your arms, and you do this. Okay, and one last exercise. There are many, but I thought of just choosing the simple ones. So आप क्या कर सकते हैं? This is called as hooks up. Okay,
सो अपने अपनी टांगे जो हैं आपकी उसको ऐसे रख लीजिए एक के ऊपर एक. सो राइट एंकल को लेफ्ट एंकल, जैसे हम बैठ जाते हैं ना, जब चेयर पे बैठते हैं हम पैर इधर रखते हैं एक दूसरे के ऊपर. हाँ ठीक है. अगेन आप देखिए हम अपनी बॉडी को क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है. सो लेफ्ट राइट एंकल को लेफ्ट के ऊपर रखा आराम से जैसे बैठते हैं. ठीक है. नाउ अपने हाथ को आगे रखिए और अपने हाथ को उल्टे रखिए ताकि थम्स नीचे हैं. ठीक है. हुआ ऐसे. अब इसको क्रॉस कीजिए और इसको पकड़ लीजिए, फिस्ट बना लीजिए. है ना, हम छोटे बच्चे थे ऐसे करते थे ना, ऐसी वाली एक्टिविटी. ओके. नाउ जस्ट ब्रिंग इट इनसाइड, अंदर रोटेट करेंगे और यहाँ हार्ट हार्ट यहाँ पे नीचे ये वाली जो चेस्ट बोन है यहाँ ला के रख देंगे. गॉट इट. बैठ गए. ठीक है. स्पाइन इरेक्ट. ओके. नाउ आपने अपने क्या करना है, अपनी टंग को अपने पैलेट पे टच करना है, जो मुंह का ऊपर का हिस्सा है. एंड टेक 3 deep breaths. Breathe in from your nose and breathe out from your mouth. One more time. Breathe in, breathe out. One more time. Breathe in and breathe out. ठीक है. अब इसको खोलेंगे, इसी इसी जो हमने पूरा इसको बनाया है इसको खोलेंगे वापस and hold it like this. Hold your fingers like this. Bring it in front of your chest. Again, close your eyes and take three deep breaths. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Just join your fingertips, right? And breathe in and breathe out. Okay. And then release your hands. Okay. आप ये देखेंगे जैसे ही आप ये एक्सरसाइज करेंगे, it's basically to integrate your mind and body system, and you're centering yourself, you're grounding yourself, and immediately your mind will become calm. Okay. So again I'm repeating, cross your legs. अपने हैंड्स को पहले उल्टा रखिए, अपने थम्स आपके नीचे होंगे, उसको क्रॉस कीजिए, उसको हैंड्स को फोल्ड कीजिए, अंदर से लेकर आएंगे, यहाँ चेस्ट बोन पे रखेंगे. टेक थ्री डीप ब्रेथ्स. 1 2 3 एंड ओपन, रिलीज. एंड इसको ऐसे बनाएंगे लाइक कोन शेप. ब्रिंग इट हियर. टेक 3 deep breaths again and release. Okay. Simple exercise. Again, it's an excellent brain workout, mind workout. Okay. I hope you enjoyed all these activities. Thank you, ma'am. Sakshi ma'am, just bring me to the last slide. So before I close. Yeah, so we did this trace X. You want to write down the name. जैसे आप नाम लिखोगे आपको activity याद आ जाएगी. You can take the screenshot also. Okay, lazy A, double doodle and Cook's hookup method. Okay. So हमें हमेशा ये याद रखना है that we are not the passenger of our life. We are the pilot of our life. हमारी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां हम चाहेंगे. राइट. एंड व्हेन आई से यूज इट और यू लूज इट, इट्स फॉर द ब्रेन. हमारा जो ब्रेन है, इट्स एन ऑर्गन बट इट एक्ट्स लाइक अ मसल. सो ईदर यू यूज इट और यू लूज इट. चॉइस इज आर्स whether we want to use it or lose it. It's like जब किसी को फ्रैक्चर होता है, आपने देखा होगा जब आम को कितने दिन तक रोके रखो, है ना, यहाँ पे फ्रैक्चर से उसे बांध के रखते हैं स्लिंग से, और कितने दिन के बाद खोलो तो वो बाजू चलती नहीं है. व्हाई? बिकॉज इट वाज अ मसल. हमने उसको यूज नहीं किया तो उसकी मूवमेंट की पावर खो गई. सेम इज विद आवर ब्रेन. इट एक्ट्स लाइक अ मसल. सिंपल फॉर्मूला याद रखो, ईदर यू यूज इट और यू लूज इट. Again, choice is yours. So here the main objective is that we are training our brain to be our friend. हम बोलते हैं ना, let's control our brain. कभी possible नहीं है. We cannot control our brain. We cannot even manage it. तो हम ये कोशिश कर सकते हैं that we train our brain to become our friend, ताकि वो हमारे लिए काम करे, ना कि हमारे अगेंस्ट काम करे. So that our brain works in our favor, not against us. Okay, so that was the whole idea of having this session. I hope I was able to do justice to this session, and justice to your time and presence, right? So this is my contact number, my Instagram handle, if you want to get in touch with me for anything. As she said, Sakshi introduced me as healer and a coach, so I do all of this. So in any form, if I can be of any help, I'll be too glad to help you. Thank you. Thank you so much. And I hope I did justice to your time and presence. Thank you so much for being here. Yes, Sakshi. Thank you. Just unshare that. Yeah. Thank you, Rooma. It was amazing. We are open for questions, feedbacks, anything anybody wants to share.
Thank you, Sanjay sir. Thank you so much for being here. Yes, I would Geeta love to ma'am. see Nilima ma'am. Thank I you think very Geeta much. ma'am. दिखा दो अपना. See, when you said संजय something सर ने तो दिखा learning, दी. जी गीता मैम. something learning, I thought at this age, I am 70 plus, so I learned something. So that itself is a learning process. Thank you. So we Yes, have so many things to learn at this age. We know only, I think, 1% of the world what they know. That is what I realized. yes. I am actually in a senior citizen community. हाँ So जी. I learn many things from people who behave in a different manner. Each one of them are from different areas, different place, different fields. So you get to know things like, some are very rigid, some are flexible. So every day you learn, every minute you learn. Yes. And every minute we have like you said, two choices. Even in the morning when you think, whether I should take bath now or afterwards. It's a, question every day. Yes. And then you have to, solve that and tackle it, Sometimes you feel, okay, I'll take bath early or I'll finish my work and then take bath, which is better, like that. Every day these questions are there and we have to solve it. That is Yes. the thing which I learn every day. I learn every minute, I feel. Thank you. Thank you so Thank much. you so much, Geeta ma'am. I would say you, Geeta ma'am and Dr. Umesh, you are inspiring me that at this age also you have that, curiosity to learn new things. I think we are learning so much from you. Thank you for being here. Thank you for I inspiring. am really very, very much impressed with whatever Geeta Shivaram madam has told. And what I can see is that with her positive attitude, Geeta madam is going to live for 100 years. Oh, Is totally. going to live for 100 years. I want to be And I healthy. That want is to very thank important. immensely Rooma madam. Rooma madam, you are not aware that आप कितना मतलब बड़ा काम कर रहे हैं. You are doing a great service because serving the senior citizens is a very challenging job, and you are doing this. And I'm sure you will be getting true blessings Thank you so much, sir. from the stakeholders, from your clients, because क्या है कि generally speaking, as the days pass and with the decline in moral values of the society, the senior citizens, many a times, they are in crossroads, what to do. And such sessions are really very important. And I have got one small suggestion that if such, whatever is the presentation, if one can share this presentation, so what will happen? It will multiply. It will the message will go, because it is not possible for many senior citizens to take the notes and all those things. So they can revise, and they can also with the support of some videos and all those things, the lifelong learning journey can become really very exciting. So I'm really very much thankful to you, Rooma madam and Sakshi madam, for organizing this. Thank you very much. Thank you, Dr. Umesh. Thank you for such beautiful words. It means a lot to us. And I think it inspires us to do, Continue our to work. think in a way that I think we are doing something, something little from our side. And we are learning so much from your end. Yes, Thank Sakshi. you so much. My blessings and best wishes to both Sakshi and you, both of you. Thank you, Geeta. Very ma'am. good. I am really enjoying each of these sessions, and it is really wonderful, and I learn a lot. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Dr. Umesh also. And Dr. Umesh, Rooma ma'am has already shared the PPT in the group first thing in the morning before starting the session here. So it's Oh, available.
you all in the group, and definitely you can go through it. Yes. And as we said, we are still there in the group. This group will still remain for a few more days because, we go through the thoughts again and again. The universe brings in some situations in life which can reconnect to you. What did you do in the morning, or what did you do in the past 11 days? So if there is any doubt, any question, or any learning that you created where you could, associate what you learned and you applied, do share your feedbacks on the group. We are still there to answer at any point of time. We're there to help. You can even approach on a direct message if you can't, if you feel, it's not supposed to be shared in the group, if you're not comfortable. We are open with all the things. But So, I will like to conclude, I will like to mention that this concept of neurology, that is integration of left and right brain, is a very powerful concept. But doing it practically in such a simplified way is something which is very, 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 very exciting, very, very useful. And 2-3 बार रूमा मैडम बोली चलो बच्चा बन जाते हैं, है ना? So I mean to say the flow of presentation has been very, very, you can say, simple, practical, excellent, though with a very, very important neurological sort of a uh, background of integration of left brain and right brain. Thank and you. also to add on, Dr. Umesh, we say, आपने seed डाल दिया है. Once a seed is sown, it will take its time to grow. It will grow. It may be unknowingly it is growing. आप कहीं ना कहीं ये चीज अपने लाइफ में यूज करते रहोगे, आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने रूमा मैम से ये सीखा था. बट वो ग्रो होते जाएगा, कहीं से पानी आएगा, कहीं से सनलाइट आएगा और वो ग्रो होते रहेगा. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट इन दैट सीड. नहीं, हम तो रूमा मैडम को फिर दोबारा सुनेंगे. वो Done. ये दिल मांगे मोर, Yes. ये दिल मांगे मोर. डेफिनेटली यस सर. आप कहाँ रहते हैं सर? कहाँ रहते हैं? मैं छत्तीसगढ़ में हूँ. अच्छा, मेरे को लगा अगर मैं नोएडा में हूँ, मैंने बोला अगर आप दिल्ली नोएडा में हो तो मैं आई वुड लव टू कंडक्ट अ सेशन फॉर सीनियर सिटीजन. अगर आपका कोई क्लब है या RWA में है या कुछ भी है, आई वुड लव टू डू दैट. हाँ हाँ, ये तो मतलब देखिए, जैसे हमारे पास जिस शहर में हम रहते हैं वहां पर कई सियान सदन है, कई सियान सदन है वहां पर. मैं कोशिश करके उनके सेक्रेटरी से बात करूंगा कि ये तो ऑनलाइन सेशन ही है, ऑनलाइन तो तो हाँ क्या जी. वो ऑनलाइन सेशन जो है वहाँ के जो मीटिंग्स हम लोग की होती रहती है, आई गो देयर. तो वहां पर जो है कि ऑनलाइन सेशन जो है वो डेफिनेटली किया जा सकता है, बिकॉज वी हैव गॉट ऑल ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज एंड दे विल लव टू हैव इट. या आई वुड लव टू टेक इट मतलब सर, जो है अगर कहने का है, ऐसी बिकॉज अपॉर्चुनिटी. एक एक फायदा तो ये हुआ है, मतलब कोविड के नुकसान के बाद एक फायदा तो ये हुआ है कि कम से कम ऑनलाइन कनेक्टिविटी इज पॉसिबल नाउ. जी जी, तो आई विल टॉक टू द पर्संस श्योर जो सर. यहाँ के सियान सदन है, उनसे मैं बात करूंगा या जो भी. अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल बी टू हैप्पी टू सर्व सर. थैंक यू. जी जी. ठीक है, थैंक यू सो मच साक्षी, एंड थैंक यू कलावेनी मैम, संजय सर एंड नीलिमा ऑल्सो. थैंक यू गीता मैम एंड डॉक्टर उमेश. Thank you, ma'am. Thank you. बाय. Thank you so much, everyone. See you all tomorrow, same time, 6:30 a.m. Thank you. Thank Have a you. good day everybody. Bye bye.